ओके, तो साइंस का क्लास 9th का एनसीईआरटी का बुक हम लोग देखेंगे। इसमें बेसिकली इस तरह से कुछ चैप्टर्स हैं। सबसे पहले हम लोग मैटर्स इन आवर सराउंडिंग्स, ठीक है। इसके बाद इज मैटर अराउंड अस प्योर, लाइक प्योरिटी की बात कर रहा है, मतलब बेसिकली पॉल्यूशन और समथिंग। एटम्स एंड मॉलिक्यूल्स, स्ट्रक्चर ऑफ द एटम्स, एटम्स के बारे में यहाँ पे इंफॉर्मेशन है। फिर बायोलॉजी में फंडामेंटल यूनिट ऑफ लाइफ, लाइक अ सेल की बात करेगा, टिश्यूज़ की बात करेगा, डाइवर्सिटी इन लिविंग ऑर्गेनिज्म, ठीक है। फिर उसका फिजिक्स में हम लोग मोशन देखेंगे, है ना, फोर्स एंड लॉ ऑफ मोशन, फोर्स एंड लॉ ऑफ मोशन, मोशन का ही अगला चैप्टर। ग्रेविटेशन फोर्स का ही पार्ट है। इसके बाद वर्क एंड एनर्जी एंड साउंड, वाई डू वी ऑल इल, है ना, मतलब डिजीज़ के बारे में। नेचुरल रिसोर्सेज, है ना, एम्पावरमेंट इन फूड रिसोर्सेस। चलिए नेक्स्ट हम लोग आगे देखते हैं। इसमें पहला चैप्टर है मैटर्स इन आवर सराउंडिंग्स। इसमें कुछ खास है ना, देखिए जो मैटर होता है ना, बेसिकली जो हम लोग ईट करते हैं, जो हम लोग देखते हैं, क्लाउड्स है, स्टार्स हैं, एवरीथिंग इज अ मैटर, ठीक है। इसको दो तरीके से, या तो मास के तरीके से या तो वॉल्यूम के तरीके से हम लोग देख सकते हैं, ठीक है। अब आगे देखेंगे फिजिकल नेचर ऑफ मैटर। फिजिकल नेचर में क्या है ना कि मैटर ऑफ पार्टिकल्स। फॉर एग्जांपल ये आपने ले लिया हो, एक्टिविटी है ये, इसमें कुछ खास है नहीं। आगे देखेंगे 100 ml का ओके, कैरेक्टरिस्टिक्स ऑफ पार्टिकल, कैरेक्टरिस्टिक्स ऑफ पार्टिकल ऑफ मैटर, ठीक है। हैव स्पेस बिटवीन देम, सारी एक्टिविटीज हैं। पार्टिकल्स ऑफ मैटर अटैच्ड each other, done like this one। अब देखो स्टेट ऑफ मैटर क्या है, ऑब्जर्व डिफरेंट टाइप ऑफ मैटर्स, है ना, जैसे वाटर है, गैस, लिक्विड है, सॉलिड है, गैस है, ये स्टेट्स हैं। अवस्था जिसको हम लोग बोलते हैं। each individual sugar or the crystal remain fixed, shape of each individual sugar, है ना, fixed whether we take it our hand, button plate, कहीं भी, ठीक है। अरे गैसीय स्टेट में क्या होता है, दूर दूर होता है बेसिकली। सॉलिड, लिक्विड और गैस के फॉर्म में, बस यही इसमें इफेक्ट ऑफ चेंज ऑफ टेम्परेचर। अगर टेम्परेचर में डिफरेंट अगर करते हैं तो क्या होता है, उसके मैटर में भी चेंजेस आते हैं। कैन चेंज द मैटर स्टेट, यस। लिक्विड से सॉलिड, सॉलिड से लिक्विड, और सॉलिड से गैस भी बनता है। ये सारा चीज़ें इजी है। हाउ डज इवेपोरेशन कॉजेज, है ना, कूलिंग। इवेपोरेशन से कैसे कूलिंग होता है, भाई वो एनर्जी रिलीज कर देती है। एंड आफ्टर हॉट सनी डेज पीपल स्प्रिंकल वाटर ऑन द रोड और ओपन, है ना, ground, because large latent heat of vaporization of water has to cool the hot surface. Cotton cloth in summer, easy है।
S.N. Bose and Albert Einstein. Bose-Einstein. Now scientists are taking 5 states of matter: solid, liquid, gas, plasma and Bose-Einstein condensation. ठीक है, ये बोस आइंस्टाइन एंड इन दोनों में हम लोग थोड़ा सा देख लेते हैं. प्लाज्मा क्या है? स्टेट कंसिस्ट ऑफ सुपर एनर्जेटिक एंड सुपर एक्साइटेड पार्टिकल. ठीक है, दिस पार्टिकल्स आर इन फॉर्म ऑफ आयोनाइज्ड गैस. आयोनाइज्ड गैस के फॉर्म में होता है. फ्लोरेसेंट ट्यूब, द फ्लोरेसेंट ट्यूब एंड नियॉन साइन बल्ब कंसिस्ट ऑफ प्लाज्मा. ओके, ये फ्लोरेसेंट ट्यूब वगैरह में और नियॉन साइन बोर्ड में प्लाज्मा डाला हुआ होता है. नियॉन गैस आर इनसाइड a fluorescent tube. There are helium gas or some other gases. The gas gets ionized, है ना? That is get charged when electric energy flows. जब इलेक्ट्रिक एनर्जी से हो जाएगा तो वो चार्ज हो जाएगा, इलेक्ट्रिक चार्ज. This charging up create a plasma glowing inside and tube and bulb. ठीक है, ये sun and the stars glow because of their presence of plasma in there. Sun and stars glows. The plasma is created stars because of very high temperature. जब वो 1920 में इंडियन साइंटिस्ट बॉस calculation for the fifth state of matter. Building on this calculation, Albert Einstein जो है ना predicted a new state of matter. 2001 Bose-Einstein condensation (BEC). Formed by cooling a gas extremely low density, about 100,000th density of normal air. ठीक है, to super low temperature. You can log on www. ठीक है, चलिए आगे बढ़ते हैं. हम लोग चैप्टर 2 में इज मैटर अराउंड अस प्योर. अब यहाँ पे हमें ये दिखाना है कि मतलब टाइप ऑफ मिक्सचर कितने तरह के होते हैं. मिक्सचर होता क्या है? डिफरेंट काइंड ऑफ उसमें एटम्स होते हैं. अब चलेंगे आगे. डिपेंडिंग अपॉन द नेचर ऑफ कंपाउंड्स दैट आर फॉर्म्ड मिक्सचर, वी कैन हैव डिफरेंट टाइप ऑफ मिक्सचर. Learn about solutions and the suspension and colloid solution is the following section. What is solution? Solution is a homogeneous mixture of two or more substance. ये है solution. ठीक है, usually we think a solution is a liquid that contains either a solid, liquid or a gas dissolved in it. But we can also have a solid solution, alloys. ठीक है, जैसे solution air. ठीक है, ये हमें समझना है. ये alloy जो होता है mixture of two or more metal or metal and non-metal and cannot be separated into their component by physical method. But alloy जो है ना वो still मैटर नहीं, वो solution नहीं, वो mixture है. Shows the properties of its constituents and can have variable composition. For example, चलिए solution has a solvent and solute.
the component of the solution that dissolve the other component in it called solvent. जो solute होगा the component of solution that is called solute. ठीक है, थोड़ा सा देख लेते हैं मिक्सचर क्या है. मिक्सचर आर कंस्टिट्यूटेड by more than one kind of pure form of matter. Pure form of matter जो मिलता है that is all sodium chloride can be separated from water by physical process of evaporation. However, sodium chloride is itself a pure substance and cannot be separated by physical process into the chemical and the constituents. Similarly, sugar substance that contains only one kind of pure matter, its composition is the same throughout. Soft drink and soil are not single pure substance, whether the source of a pure substance may be. That is a mixture है. ठीक है, आगे हम लोग देखते हैं solution of sugar in a water, a solid in liquid solution. ये सारे हैं. होमोजेनस मिक्सचर होता है. कोलाइड का एग्जांपल देखते हैं. डिस्पर्स्ड फेज, डिस्पर्स्ड मीडियम और टाइप एरोसोल. एग्जांपल separating the components of mixture. What are types of pure substance? Either element or compound. अच्छा, एलिमेंट क्या होता है? Divided into element as a basic form of matter that cannot be broken down into simpler substance by chemical reaction. Metals, non-metals and metalloids, ये elements होते हैं. ठीक है. Metals usually show some of the following properties like a luster, shine. सिल्वर, ग्रे, गोल्डन, येलो कलर होता है ना. हीट एंड इलेक्ट्रिसिटी, कंडक्शन होता है इसमें. देख, डक्टाइल वायर्स में, और मेलेबल, हैमर्ड, सोनोरस. ठीक है, ये सब प्रॉपर्टी हमने देख ही रखा है. चलिए आगे देखते हैं. अगला चैप्टर एटम्स एंड मॉलिक्यूल्स. एटम एंड मॉलिक्यूल्स में ना बेसिकली ये देखेंगे हम लोग. ये ब्लॉक्स मतलब स्मॉलेस्ट ब्लॉक होता है. लॉज ऑफ कंजर्वेशन ऑफ मास. Constant proportion. Mass can neither be created or destroyed by chemical reaction. Constant proportion.
A ratio of mass of hydrogen to the mass of oxygen is 1:8, whatever the source of water. What is an atom? The small grain of sand. ठीक है, building blocks of all the all matter are atoms. In the beginning, the names elements derived from the name of the place where they are found for the first time. Name copper was taken from the Cyprus. Some names were taken specific color. For example, gold was taken from the English word yellow. Argon, bromine, boron, and calcium, carbon, chlorine, cobalt, hydrogen, carbon, nitrogen, oxygen, sodium, 23 atomic mass. What is molecule? Together attractive force. Molecules of compound. Chapter molecules. Molecules are generally a group of two or more items. अच्छा, एटम्स के ग्रुप को ही मॉलिक्यूल कहते हैं, ठीक है ना। नॉन मेटल ये सारा है। एटॉमिसिटी, डायटोमिक, मोनोटॉमिक, ऐसा कैसे होगा भाई? The molecules of an element are constituted by the same type of atom. Okay, molecule जो था ना, same type of atom. Molecule of many elements such as argon, helium, these are made up of only one atom of element. But it is not the case with the most of non-metals. Non-metals में ऐसा नहीं होता. For example, molecule of oxygen have 2 atoms of oxygen. Hence, it is known as diatomic molecule. If 3 is a atoms of oxygen unite into molecule instead of 2, ozone, known as its atomicity. Tetra polyatomic. Molecules of compound. Different elements joined together define definite proportion, and to form molecules of compounds.
H2O, molecule of some compound. ठीक है. What is an ion? Compound composed of metal and non-metals, contain charge species. ठीक है. Charge species are known as ions. Ions may consist of a single charge atom or a group of atoms have the net charge of atom. An atom can be negative or positive. ओके, नेगेटिव को बोलते हैं कैनायन और पॉजिटिव को बोलते हैं कैटायन. कैटायन पॉजिटिव. चलो, क्लोराइड आयन में Cl माइनस. राइटिंग केमिकल फॉर्मूला कैसे लिखा जाता है, तो यही है सारा. कंबाइनिंग पावर, ठीक है, ऑफ द एलिमेंट इज नोन एज बैलेंसिंग. कॉम्बिनिंग पावर. ठीक है. चलिए, सिंबल में C1 तो हम लोग ऐसे लिखते हैं CCl4. ओके, ये सिंबल होता है, उसकी वैलेंसी होती है. फॉर मैग्नीशियम क्लोराइड वी राइट द सिंबल अच्छा, फॉर्मूला ऑफ अ सिंपल कंपाउंड एंड राइटिंग ऑफ केमिकल फॉर्मूला फॉर द एग्जांपल सिंबल और इसकी वैलेंसी. फॉर एग्जांपल फॉर्मूला ऑफ हाइड्रोजन क्लोराइड. वन हाइड्रोजन सल्फाइड H2S. वैलेंसी इसका 2. ठीक है, समझ में आ गया. आगे चलते हैं. लोग अगला चैप्टर इसमें देखेंगे, स्ट्रक्चर ऑफ एटम. एटम्स एंड मॉलिक्यूल्स हम लोगों ने वो देख लिया. अब यहाँ पे डिफरेंट ड्यू टू डिफरेंट एटम कंस्टिट्यूटिंग देम. ठीक है. व्हाट मेक्स द एटम ऑफ वन एलिमेंट डिफरेंट फ्रॉम द एटम ऑफ अनदर एलिमेंट. ठीक है. Are atoms really indivisible as proposed by the Dalton, or there are smaller constituents inside the atom? A major challenge is charged particle in matter.
from these activities we can conclude that rubbing two objects together they become electric charge. Where does this charge come from? Atom is divisible and consists of charged particles. ठीक है. Many scientists contributed to revealing the Since the atom was composed of proton, electron, mutually balancing. Protons were in interior of atom, whereas electrons are easily removed. But not protons. Now the big question was what sort of structure? This is electron positive. Positive sphere electrons. Thomson model of an atom. J.J. Thomson. Okay, Thomson proposed atom consists of positively charged sphere and the electrons are embedded in it. The negative and positive charge are equal in magnitude, so atom as a whole is electrically neutral. ठीक है, Rutherford's model of an atom. Gold foil and wanted thin layer, ठीक है, 1000 and alpha particles are doubly charged helium ions. Since they have mass over unit, the fast moving alpha particle have a considerable amount of energy. Following observation क्या निकला? Most of the fast moving alpha passed. ठीक है. Some of alpha particles were deflected. Small angles of energy. Rebound. If you drawbacks of Rutherford model. Bohr's model of atom. Atomic number and mass. अच्छा, मास नंबर क्या होता है? आइसोटॉप क्या होता है? आइसोटॉप इक्वल सेम एटॉमिक नंबर, है ना, नंबर सेम आइसोटॉप में नंबर सेम एटॉमिक नंबर. आइसोटॉप और आइसोबार में
आइसोबार में क्या होता है? प्रोटॉन्स डिफरेंट बट द मास नंबर, ठीक है। बट द मास नंबर बहुत 40, मास नंबर सेम होना चाहिए, लेकिन the fundamental unit of life and like a cell